Thank you for inviting us, SGI. हाँ जी यार, बहुत सारे कैमरास हैं, बहुत सारे फोन हैं। आप खींच रहे हो, खड़े उस लड़के ने वो नहीं पहना, यूनिफॉर्म। There are 3 guys over there. ओके, आप लोगों का personality and professional grooming. We are honored to have Mr. Raghu Ram and Mr. Rajiv Lakshman with us today, who are esteemed specialists in pondering the personality and grooming the same. Thank you. Please come up and welcome our esteemed guests. Please give a round of applause. Thank you, SGI. Today is not my day. Today is a day for Mr. Raghu and Rajiv. So it's our pleasure that from now onwards, Mr. Raghu Ram and Rajiv Lakshman, both will be a part of the SGI, and continuously they will come to our institute to give you the instructions, to give you the smartness, to give you the personality development modules. So I welcome on behalf of all this Martha group of institutions, Mr. Raghu Ram and Mr. Rajiv Lakshman, along with their other persons and parents particularly. Welcome, sir. Welcome everybody. Thank you very much. First of all, I'd like to say, whatever I say, it's not going to be formal, okay? It's going to sound formal initially. I want to thank SGI for making us a part of, allowing us to be a part of this institution. Please put your cell phones on silent. The reason I'm really thankful is because Rajiv and I are not qualified to teach a lot of subjects. If an institution is still inviting us to be a part of their staff and interact with students, it means that that institution is taking education seriously. It's not focusing on textbooks and marks, though marks are, we all know it's a little important nowadays. But by the time you come out of the institution, there will be a lot more that you would have gone through. There's a lot more that you would have possibly been exposed to and possibly have learned. In today's world where there is so much competition that a college has now put the cutoff for BCom honors as 100%. I think students need whatever edge they can get to kind of, distinguish themselves, differentiate themselves from the crowd. Okay? Hopefully, we'll be able to be a part of that little differentiation for you guys. Hopefully. Raghu and I have been very vocal about our displeasure of the way the education system is the direction in which it is moving. Not because we feel education is bad, but we feel education is not unidimensional. Yeah? Education is not about just one thing in your life. It's not about कितना ज़्यादा तुम रट्टा मार सकते हो, कितने फर्रे अच्छे बना सकते हो. It's not about that. Yeah? It's about a lot of other things. Right? यहाँ से तुम बाहर निकलोगे, नौकरियाँ करोगे, तुम्हें बहुत जल्द वो रट्टा मारना और वो फर्रे बनाना बहुत ही
रिडंडेंट लगेगा। लाइफ में तुम्हारे और चीज़ें काम आएंगी, जैसे कि पर्सनैलिटी, जैसे इनिशिएटिव, जैसे मैनेजरियल स्किल्स, टीम बिल्डिंग स्किल्स। You have a phone with you? Yes, I do. Catch. Yeah, sorry about that. Yeah. So, in fact, SGI has come together with us to say we share that vision of building a team of people, a generation of people who are not just kitabi kide, who are intelligent, who are into academies, Who are truly educated. Yes, who are truly educated, wholesomely educated. And once again, I also thank SGI for making us part of this initiative, and thank you all. Now I give you the bad news. What have you done? Have you seen us on screen? You hate your students. You don't like them. You want them to get beaten up. Why do you call us? For your confidence. The whole route is there. Okay. You can travel. The whole point is, see, I'll tell. If you say, "Bete, you're not doing well. Please get this signed by your parents." I don't work like that. कैमरा थोड़ा साइड में हम वॉक कर सकते I'll beat you up. ये हरियाणा में ये भी मेरा इलाका है. हम खुश रहे लोग. ठीक है, बढ़िया, मस्ती करेंगे। आप लोगों ने यूनिफॉर्म क्यों पहना हुआ है? मैं I just wanted to understand. हाँ? Some people are not wearing uniform. They're cool ones. For the institution, it is quite necessary to be formal because we are representing our institution. All right, cool. Well, that's बाहर all. किसी ने लफड़ा किया तो साफ पता लगा किस कॉलेज के स्टूडेंट. That's good. That's good. Any questions? Any of you? Okay, today we're not, obviously we're here just to get to know you guys, okay? And I know you guys have the same old stupid questions that you will ask. Go ahead, ask, let's get that out of the way, so we can, move ahead and do something constructive. This is just about getting to know you guys. आपको mic पे जरा mic दे दो. सर पहले जानता नहीं था, मतलब रोटी के बारे में पता नहीं था पहले, तो मैंने रोटी एक को देखा। फैकल्टी के सामने बताना चाहते कि तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देते हो। वो मिड पॉइंट था, 183 डेज खत्म हो गया, तो 2011 आधा खत्म हो गया और दूसरा आधा आज से शुरू हुआ, ठीक है? तो पहला आधा साल मैं कमरे के अंदर ही था, मैं एडिटिंग कर रहा था। एक आधा साल मेरा निकल गया, अब मैं बाहर आया हूँ। अब ये मत बोलो रोटी स्टैंड कब शुरू हो रहा है, फिर मैं घुस जाऊंगा, ठीक है? Thank you. Anyone else? Please raise your hand, ask for the mic. I'm sure you have questions. This lady over here. I have a question. Right after the आप दोनों को डिफरेंशिएट करने का कोई अच्छा तरीका? इसके हाथ में पड़ती है। इसको लगी नहीं है, ये ऐसे ही हम जानते हैं, ऐसे ही करके हम लोग कंफ्यूज ना हो। वो जरूर। बड़ी मजे करते हैं। Hello, sir. Hi. Okay. As we talk about the personality traits, shoes, hairstyle. So, what about the hairstyle? What is hair? Only style. Good, sir. I'll tell you. If we inspired, someone inspired from you or with you, so what do you think? Do you suggest that they should have such a style? Actually, you should find your own style. Honestly and seriously, you should find your own style. Personality hairstyle से नहीं आती, गंजे होने से भी नहीं आती. But I'm very much Personality is sure. not about. I'll tell you something. ऐसा नहीं कि आपने hair cut कर दिया तो आपका personality change हो गया. ऐसा नहीं है. It's about, see, personality is finding yourself. Personality has person in it, okay? And it's all about who you are, and hopefully, see, what I'm planning to do over here is actually to interact with each one of you individually. Yeah. पता हमने कहा यार स्पाइकी हेयर अच्छे, सारे स्पाइकी हेयर हमसे बात कर रहे हैं, पता नहीं चला कौन क्या है। मैं तुम्हें समझा देता हूँ हम दोनों के बारे में एक चीज़। अगर हमारा करियर के बारे में आप कुछ जानेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमसे पहले हमारे प्रोफाइल का कोई भी इस ना हम एक शो सिंगिंग के लिए जाने जाते नाम हैं, से, ना हम डांसिंग के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाना जाता है उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। लेकिन अलग अलग किस्म का हमारा प्रोफाइल है। हमारा हेयर स्टाइल भी
काफ़ी इंडिविजुअलिस्टिक है। हमसे पहले कोई ऐसा शेप्ड हेड लेके आया नहीं था। हमारा इंटेंशन नहीं है डिफरेंट होना। हम डिफरेंट हैं। जैसे आप में से हर कोई डिफरेंट होगा। आप लोग जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ज़िंदगी में, आप समझोगे तो आप में क्या डिफरेंस है। That means Just hold on अपने to it. आप को आइडेंटिफाई करो। जरूर से पहला कदम वही है। Thanks sir, thank you. You're welcome. To see you there. Thank you. Would you like water? Miss Panchayat? Very very warm welcome in SGI. Thank you. Actually, I just wanted to know it's. मैं कब से follow कर रही हूँ? I think in mid 4 Roadies 4 was there. I am following Roadies and always I see you कि आप बिल्कुल same रखते हैं। तो is it really so आप सिर्फ show पर ऐसा alike same रखना चाहते हैं या are you really so alike in your real life also? Real life also. देखो मुझे पता नहीं आप लोग कितने जो है बच्चों से आपकी बातचीत या इंटरेक्शन रहा है। ट्विंस में अक्सर ऐसा होता है कि वो एक किस्म के ख्यालात या पर्सनैलिटी एग्जिबिट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड नहीं किया था ब्लैक शर्ट ब्लू जींस पहन के आएंगे। या ब्लैक शूज भी It is not decided. This is not decided. हम दोनों अपने होटल रूम से निकले तैयार हो गए। बट हमारी जिंदगी काफी साथ ही रही है। जैसे कि स्कूल भी हमने साथ गए, साथ कॉलेज गए, साथ कॉलेज छोड़ा, साथ काम शुरू किया, नौकरी छोड़ना, नई नौकरी सब एक साथ किया। और तो हमारे लाइफ में अगर एक चीज कांस्टेंट है वो पीछे उन सबके कट्स हैं। हाँ वो मत पूछो कैसे वो पानी या था अगर टूटा ना था प्लीज थोड़ा पानी अच्छा है। शुक्रिया। Well, Good afternoon, Hi. Raghu and Rajiv. Jambo. Yeah, my name is Sarikishan Singh. I'm a student of second year MBA. So I just want आपके to बाल अभी से झड़ रहे हैं? No. It's a reason which I can't tell Okay, anybody. okay, go ahead. That's a personal reason. No mind. So क्या पूछ रहे थे आप? Sir, what I have come to know that we have two definitions of MBA. Okay. Merit but available, हाँ. Master of Bad Activities, Okay. and studies also. But have you any which definition? मियाँ बीबी और औलाद। Thank you.